तो ये है अद्भुत अकल्पनीय स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने भारत के आयरन मैन, लोखंडी पुरुष, जिसकी विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा 182 मीटर ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा यहाँ पर है। ये देखिए, इतना सुंदर नज़ारा है ये और अद्भुत जगह है जी। इतना सुंदर ये स्टैच्यू बनाया हुआ है। ये देखिए, हम अब उनके कदमों से हम ऊपर गए थे, जिसका मैंने दूसरा अलग वीडियो डाला हुआ है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का। ये उनके चरणों में जब नीचे उतरते हैं तब नीचे एक म्यूज़ियम बना हुआ है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी म्यूज़ियम। ये सेल्फी पॉइंट है। म्यूज़ियम भी बहुत अच्छा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों के ऊपर आधारित ये पूरा म्यूज़ियम है। उनकी पूरी जीवनी दी हुई है यहाँ पर। ये देखिए, ये सेल्फी पॉइंट क्रिएट किया हुआ है। सरदार कहते थे, आलस्य छोड़िए और बेकार मत बैठिए, क्योंकि हर समय काम करने वाला अपनी इंद्रियों को आसानी से वश कर लेता है। और उनका दूसरा भी ये मानना था कि जब तक हमारा अंतिम ध्येय प्राप्त न हो जाए तब तक उत्तरोत्तर अधिक कष्ट सहन करने की शक्ति हमारे अंदर आए, यही सच्ची विजय है। ये देखिए, ये प्लेज है, प्लेज लेने की जगह है। राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति मेक अ प्लेज फॉर बेटर इंडिया, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना था और उन्होंने जो करके दिखाया। उनके जन्म दिवस को हम एकता दिवस के रूप में मनाते हैं और कहते हैं कि अगर उन्होंने जो कहा वही अगर माने, जीवन में उतारे, तो ही सच्ची श्रद्धांजलि है सरदार पटेल को। ये प्लेज अलग अलग यहाँ पर रखे हुए हैं, आप ज़रूर लेना। वहाँ पर जाकर प्लेज सेक्शन बनाया हुआ है बच्चों के प्रति, बच्चों को अवेयरनेस के लिए बहुत सुंदर डिज़ाइन किया हुआ है। ये सारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो अचीवमेंट्स थे उनके जीवन के, ये सारे अलग अलग फोटोग्राफ के द्वारा आगे छोटा सा मूवी हम देखेंगे। ये देखिए, ये गुजराती में है, बाद में मैंने इंग्लिश में भी रखा हुआ है। तो मूवी देखते हैं। 15 ऑगस्ट 1947 ની મધ્યરાત્રિએ ભારતે સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરી, પરંતુ ભાગલાના રક્તપાતે તેને નુકસાન પહોંચાડ્યું. સરદાર ભારતના પહેલા નાયબ વડાપ્રધાન અને માહિતી અને પ્રસારણ ખાતા ઉપરાંત ગૃહમંત્રી તરીકે ચૂંટાયા હતા. ભાગલાના મજબૂત વિરોધ બાદ હવે તે ભાગલાની પ્રક્રિયા અને વિધ્વંસને ઓછું પીડાદાયક બનાવવાના માર્ગો શોધી રહ્યા હતા. એક અનુભવી નેતા અને બાહોશ રાજનીતિજ્ઞ હોવા છતાં તે હવે બે મોટા પડકારોનો સામનો કરી રહ્યા હતા. પહેલો પડકાર, ભાગલાને કારણે ફાટી નીકળેલી સાંપ્રદાયિક હિંસાને નિયંત્રિત કરવી, ઉશ્કેરાયેલા ટોળાને નિયંત્રિત અને શાંત કરવા, તેમજ શરણાર્થીઓ માટે અન્ન, આશ્રય અને સુરક્ષિત પરિવહનની વ્યવસ્થા કરવી. બીજો પડકાર, 550થી વધુ વજવાડી રાજ્યોનો સંયુક્ત ભારતમાં વિલય થાય એ બાબત સુનિશ્ચિત કરવી. તેમની સંકલ્પ શક્તિ અને દૂરદર્શિતાના ઉપયોગ દ્વારા તેમણે રજવાડાઓને ભારતીય શાસન સાથે જોડાવા માટે મનાવી લીધા હતા. વર્ષ 1946 થી 1950 દરમિયાન 4 વર્ષ સુધી અથાગ કામ કરીને હવે વધારે ભાગલા ન પડવા દેવાના મોટા પ્રયોજનની પ્રતિબદ્ધતા સાથે ભારત માતાની સુરક્ષા અને એકીકરણ દ્વારા તેમણે ભારતીય એકતા સુનિશ્ચિત કરી, જે પોતાના દેશ માટે તેમનો સૌથી મોટો વારસો અને ભેટ.
દેશ માટે એક મજબૂત ઢાંચો તૈયાર કરવાની તેમની દૂરદર્શિતા અને ઝુંબેશ સાથે તેમણે ભારતીય બંધારણની રૂપરેખા તૈયાર કરવામાં પણ ખૂબ જ યોગદાન આપ્યું. અસરકારક પદ્ધતિઓ અને સેવાઓની શક્તિને સારી રીતે સમજતા હોવાથી તેમણે ભારતીય વહીવટી સેવાઓ અને ભારતીય પોલીસ સેવાનું નિર્માણ કરી તેને માળખાગત કર્યું. વર્ષ 1950માં સરદાર પટેલે તેમનો અંતિમ શ્વાસ લીધો અને આ દેશ તેમના સરદારને ગુમાવવાથી શોકમગ્ન થઈ ગયો. વિવિધ પ્રકારની સંસ્કૃતિઓ, સમુદાયો, ભૂમિઓ અને ભાષાઓ હોવા છતાં આપણા દેશની એકતાના ગૌરવ માટે આપણે તેમના ઋણી છીએ. તેમણે ફક્ત ભારતના નકશા પર જ નહીં પરંતુ દરેક ભારતીયના હૃદય અને મન ઉપર પણ તેમની એક અમિત છાપ છોડી છે. સરદારનો આ વારસો આપણને માર્ગદર્શન અને પ્રેરણા આપતો રહેશે. આ દેશ તેની વર્ષગાંઠ 31મી ઓક્ટોબરના દિવસે તેમની સ્મૃતિમાં રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ રૂપે ઉજવીને અને આ મહાન રાષ્ટ્રીય નેતાની સાબિતી રૂપે ઊભી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની પ્રતિમા સ્થાપિત કરીને તેમને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી છે. એ તો હમણાં આખું બધું આમાં બી આવશે, બીજી આવશે ને એમાં નાઇટ શો. And a clear vision for a free, strong and united India. Born on October 31st, 1875 in Nandiyar, a town in the Kheda district of Gujarat, to Zahir Bhai and Ladwa, Vallabhbhai Patel had 4 brothers and a sister. In the rustic settings of Karamsad village, he grew up to be a self-reliant child, helping his father in the farm while working equally hard at school to emerge as a self-trained district lawyer. Vallabhbhai Patel married Zabinba and was blessed with 2 children, Maniben and Daliabai. Zabinba died young, leaving him a worried and lonely man. However, deep down the embers of ambition to take up the cause for the country's freedom simmered. At 35, Vallabhbhai Patel went to London to study for the bar at the Middle Temple, where he worked relentlessly and passed with flying colors. Returning to Indian shores in 1913, Vallabhbhai Patel soon became Ahmedabad's leading criminal lawyer, gaining a reputation for his brilliant arguments in court. On the advice of friends, he took up a new responsibility alongside his flourishing legal practice. He was elected into the municipality and worked diligently to improve the sanitation, electricity, water supply and town planning in Ahmedabad. In 1917, Vallabhbhai Patel met Mahatma Gandhi, and that would change the course of his life. He was won over by the Mahatma's philosophy of Satyagraha, that unique non-violent resistance to British oppression. Gandhiji was quick to spot Vallabhbhai Patel's intellect and ability and immediately spurred him to spearhead Satyagraha in his home district of Kheda in 1918. There was no looking back thereafter. He went on to successfully lead the Satyagrahas in Borsad and Nagpur in 1923 and in Bardoli in 1928, after which he became nationally renowned and people started to call him Sardar or leader. A man on a mission, Sardar Patel galvanized thousands of Gujarati farmers to offer non-violent resistance to the unjust revenue demands of the British. In Nagpur, he championed the Freedom Fighters campaign for the right to fly the Indian tricolour, which made him Gandhiji's trusted lieutenant and spurred him on to the forefront of the freedom struggle. In 1942, with Gandhiji's clarion call of Quit India reverberating throughout
the country and lending fresh momentum to the freedom struggle. The British arrested and jailed Gandhiji, Sardar Patel and other prominent leaders. Sardar Patel himself was jailed 6 times during the freedom movement. Following his release on 15th June 1945 and against the backdrop of World War II, the British were forced to drum up support from the Indian troops that led to negotiations that would further weaken their hold on India, clearing the path for freedom. The British would soon leave the Indian shores forever, but a new tide was turning. The Muslim League, led by Muhammad Ali Jinnah, had garnered the support of many Indian Muslims with its agenda to create a separate nation for the Muslims and establish Pakistan. Despite strong opposition from the Indian leaders, the partition of India was inevitable. India gained freedom at midnight on 15th August 1947, but it was marred with the bloodshed of partition. 6 बजे शाम को 6 बजे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बंद हो जाता है, यहाँ का म्यूज़ियम क्लोज़ हो जाता है। तो ये पूरा म्यूज़ियम अगर आपको ठीक से देखना है तो 1 से 1.5 घंटा आप स्पेयर रख के ही आइए। और बहुत सुंदर म्यूज़ियम बनाया हुआ है। सरदार कहते थे कि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना ही सही श्रद्धांजलि है देश के प्रति अपनी। तो यही बात उनकी अगर हम भी जीवन में उतारते हैं, अपनी देश के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उसका निर्वहन करते हैं और करना ही सरदार पटेल को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये देखिए सेल्फी पॉइंट इतना सुंदर यहाँ पर बनाया है। सही में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया हमारे देश के लिए, आज कहते हैं अगर वो नहीं होते तो शायद देश के हर एक राज्य में हम घूमते रहते हैं। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेशन किया था। ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कैसे बना उसका पूरा निर्माण कार्य का डिटेल दिया है। ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा, बाकी सारी प्रतिमाओं के साथ कंपैरिजन किया हुआ है। ये आई एम एट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सेल्फी पॉइंट है। सही में कहते हैं अगर सरदार नहीं होते तो आज जो हम राजस्थान से गुजरात जाते हैं बिना किसी परमिशन के, बिना किसी पासपोर्ट के, वो सिर्फ सरदार पटेल की सूझबूझ और उनकी दूरंदेशी के कारण ही है। नहीं तो देश का जब पार्टीशन हुआ तब कहते हैं अगर पूरे देश को उन्होंने एक धागे में नहीं पिरोया होता तो आज शायद जम्मू कश्मीर से पंजाब जाने के लिए आपको पासपोर्ट चाहिए होता है। आपको अगर पंजाब से कलकत्ता जाना है पासपोर्ट का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि सारे प्रांतों में डिवाइड। ये सबको एक सूत्र में बांधा तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इसका और एक हिस्सा है, मैंने पूरा उनकी जीवनी कवर अप की है। यहाँ पर जो कुछ भी दिखाया है उसके ऊपर